Honorable Vice Chancellor Professor Dr. Utpal Joshi sir, Guest of Honor Sri Mitesh Ladani sir from District Industries Center Rajkot, Special Guest and MIC Representative Sri Mitesh Wadher sir, FDP Coordinator Dr. Ranjan Khunt ma'am, Co-Coordinator Mr. Parth Sejpal sir, Mr. Bharat Thakur sir, President Federation of Entrepreneurship, esteemed faculty members, participants, friends, good evening to all. I request our respected dignitaries to please come on the stage. We have now reached the concluding moments of our week-long faculty development program on innovation and entrepreneurship hosted by the Saurashtra University under the guidance of Ministry of Education, Innovation and AICTE. Over the past 5 days, we witnessed a vibrant exchange of knowledge, frameworks, tools and experiences that empowers educators like to nurture innovation, guide young entrepreneurs and foster a startup mindset. With our institutions, we covered everything from customer discovery, lean startup and pitching of intellectual property, financial planning, business modeling and incubation practices. Now I request Dr. Ranjan Khunt ma'am to kindly welcome our Chief Patron, Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. Utpal Joshi sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Now I request Sri Mitesh Wadher sir to kindly welcome our guest honor of Sri Mitesh Ladani sir. Thank you, sir. To formally begin the valedictory session, I invite Dr. Ranjan Khunt ma'am, Coordinator of the FDP, President of IIC Saurashtra University, to deliver the brief overview of the FDP. Good afternoon, one and all. Respected Honorable Vice Chancellor, Professor Utpal Joshi sir, President of Institute Innovation Council, Sri Mitesh Ladani sir from District Industrial Centers, Sri Bharat Thakur sir, Federation of Entrepreneurship, Sri Mitesh Wadher from Ministry of Education, Innovation Cells, Mr. Parth Sejpal, Chair Professor, Spriha, respected faculties and dear participants from Saurashtra, Gujarat and across the India. As we know that we have completed our 5 days journey on the self-development as a mentor, as an academician on innovation and entrepreneurships. During these 5 days journeys, we have provided the continuous 40 hours brainstorming session divided in 16+2 sessions. We as academicians or mentors get the opportunity to discuss interaction, solution of our problems from galaxy of speakers from the various field of as such as industries, academia, innovation centers and different associations associated with such activity like innovation and entrepreneurial activities. We have esteemed speakers from various fields who have shared their expertise with us, such Mr. Vishal Sarvaiya sir, Dr. Bindya Chauhan madam, Mr. Nikhil Sutha sir, Mr. Bhavin Dabhi sir, Mr. Vishal Khaskiwala sir, Mr. Sumit, Mr. Sandeep Tankwali sir, Mr. Bharat Thakur sir and other who also get the opportunity to interaction with Mr. Parth Sejpal and Mr. Mitesh Wadher as an organization of this FDP at different fields like fund availability, business model, intellectual property rights, entrepreneur mindset development, creativity,
customer relationships, problem solution and validation, market opportunity, and many other associated field with the business model. I hope you have take the maximum advantage of this faculty development program, and now you are our ambassador to share the knowledge with your students at your college center and contribute to Atmanirbhar Bharat mission as well as Startup India missions. So this is the everything summary related to that, what we have get and what we have to try to give on you, and with share the problems and creativity related to this function. I express my sincere thanks to our Vice Chancellor to permit us of such type of organizations event. I'm also thankful to Ministry of Education for providing the fund supports, computer centers, Mr. Rohit Molia and Nirav Wagadia for a live presentations, social media promotions and recording and other related activities. I also thankful to head of the journalism departments and his team, for the press media, electronics media and press release and related to activity. I'm also thankful to staff of incubation center, Anjali, Vaisali, Urvi, Urvisha, Rita, Dr. Chirag, Digvijay C, Awadh, Manisha Ben and many others to make the continuous effort make this event successful. I'm also thankful to Dr. Kothari, head of the Bioscience department, provide the video shooting instrument for us. I'm also thankful to catering service, Mr. Jayas Satani and many more for that things. I'm also thankful to Priya Madam, head of the pharmacy department, provide the halls and other infrastructure facility. I'm also thankful to our estate department, provide this auditorium and guest house facility to use for this and continuous supports. Last, I'm also thankful to participants. Without their support, this event is not successful. So I'm also highly thankful to them. I'm heartily thankful to all who are directly or indirectly involved with us to make this event successful. I'm also thankful to volunteer from Gita Ben from economics departments, Deep Pramak and Kahan from the nanoscience department for this 5 days their volunteer service. Thank you all. Thank you. Thank you, ma'am, for encapsulating the journey and achievements of this program so beautifully. Now we are honored to welcome a special address by Sri Mitesh Wadhe sir, Innovation Fellow at MIC. His presence adds great value to this program and its vision. Please, Mitesh sir. Yeah, good evening. It was a great experience to be with you for all 5 days. Before organizing this activity, I have been fortunate enough that this is the first time I have been with you through all 5 days. Otherwise, I have been rarely for just 1 hour in any of the FDPs. So before this, I have coordinated 4 FDPs, this kind of FDPs, 2 in Chhattisgarh, one is NIT Raipur and second is CVRU. It's a private university in Chhattisgarh, and 2 in Gujarat. One has been Parul University and one has been PDU. But I haven't been fortunate enough to be there for 5 days. So I have been fortunate enough, and the team who forced me to Honorable Vice Chancellor sir, Registrar sir, Ranjan Madam, Parth sir and the whole team of SUSEC who have been here with us in any of the events, even earlier district level sensitization programs. So हम जब वीसी सर ने जब ऑफिस ज्वाइन किया था तब थोड़े ही दिनों में, आई थिंक 10 एक दिन में हम पहली बार गेट क्रैश करके सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी आ गए थे. दूसरे हमारा यहाँ पे एक बूट कैंप था फरवरी में. सो वी हैव सिंस देन हमने हर महीने एक आध बार हमने कॉल लगाया है और अभी तक कोई भी चीज़ का मना नहीं किया है. सो हम जो कुछ भी अभी ये सौराष्ट्र रीजन में प्लान कर रहे हैं, सो वी आर थैंकफुल टू सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी फॉर एनी टाइम बीइंग रेडी फॉर होस्टिंग इट. अभी जिसे आप फीडबैक में बोल रहे थे कि अभी ये जो FDP है उसका एडवांस वर्जन होना चाहिए. सो वी आर ऑल्सो प्लानिंग एडवांस FDPs आफ्टर 5 days. We are also, this was just a pilot of 60 FDPs. So we are also planning 1000 FDPs in such a way that in every 50 kilometer radius, we will be planning to give 1 FDP to 1 host institution. So we are also expecting from all of you to start IIC activities, and you please register.
we are at least expecting 200 institutions of this region from SU affiliation to at least start doing activities and take help of SU SEC and us whenever required. You have the details. So we are also planning regional meet specifically first time in Saurashtra region, that will be in Rajkot. So we from right only we invite you to join us in regional meet that will be in August end for Saurashtra region in Rajkot. On behalf of we are also having innovation ambassador program, so we request you to participate in that program, as well as mentor mentee and impact lecture scheme, which has been just released on 40th July when we started this FDP. So these schemes are going on and you can take advantage of it, right? We are also thankful to all the institutions who have allowed you to join with us for 5 days, and we are also thankful to participants who came from Morbi, Jamnagar, Amreli, Upleta, and even also from Baroda, Kutch also. Okay, yeah. So one more thing is we are like you have some 500 institutions which are government grant in aid and Gram Vidyapeeths. So similar FDPs, like whatever you have learned in 5 days, similar program structure we have given to all the institutions who have hosted these FDPs. So whatever you learn, whatever structure that you have learned, similarly 3000 faculty members, you are part of those 3000 faculty members who have learned the same across India. So we wish to also mobilize you to nearby institutions whenever possible. So at least you start doing activities so that it will be easy for us to also take your help to support by nearby institutions. Yeah, thank you. Thank you, sir, for your inspiring thoughts and continued support to the ecosystem. Next, I feel privileged to invite our guest of honor, Sri Mitesh Ladani, sir, from the District Industries Center, Rajkot, to share his view on the role of innovation and institutional collaboration in driving regional entrepreneurship. Thank you. Namaste. Good evening, respected Vice Chancellor Dr. Utpal Joshi sir, dignitaries on the dais, off the dais. मैं 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं करूँगा, दैट्स लिमिट, क्योंकि डीआईसी का मेन काम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लेड बाय इनोवेशन स्टार्टअप्स एंड ऑल. सो हमारा प्रेजेंटेशन वगैरह बहुत सारे इंडस्ट्रीज एसोसिएशंस के साथ एमएसएमईस के साथ रहता है, तो 1.5 से 2 घंटे का प्रेजेंटेशन रहता है. सो बट मैं बहुत कम बात ये सारी समराइज कर दूंगा. हमारी ऑफिस क्या करती है फ्रॉम आई मीन सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसेस, इंडस्ट्रीज, एमएसएमईस, इनोवेशंस का ग्रोथ के लिए फ्रॉम द गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव आई विल टॉक. जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में सर हम देखें तो अब जितनी भी मिनिस्ट्री है तो हाफ ऑफ मिनिस्ट्रीज विल बी आई मीन उसका जो भी कोलैबोरेशन है वो इंडस्ट्री के साथ रहेगा. मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमईस, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. तो आप देख सकते हो कि देश में जो इंडस्ट्रीज़ है, सर्विसेज है, उसके विकास के लिए ऑलरेडी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज है सेंट्रल गवर्नमेंट में. उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट आती है, तो स्टेट गवर्नमेंट में भी जैसे उससे भी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का अलग डिपार्टमेंट है, रूरल इंडस्ट्रीज़ है, एमएसएमईस है, लार्ज इंडस्ट्रीज़ है. बाद में जैसे स्किल डेवलपमेंट की बात आई तो आईटीआईस है, एक तालुका में 10-10, 12-12 आईटीआईस है. और यूनिवर्सिटीज़ में भी अब इनोवेशन स्टार्टअप्स वगैरह की बात रहती है. तो अब हम सब जानते हैं कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर का विज़न है. शॉर्ट टर्म विज़न की बात करें तो हमारी इकोनॉमी $5 ट्रिलियन बने, और उसके बाद 2047 तक की बात है तो इंडिया विल बी द डेवलप्ड नेशन इन लाइन विद यूएस एंड चाइना. तो ऐसा लॉन्ग टर्म विज़न भी है. बट उसके लिए अभी हमारा जो बेस है इंडिया में टोटल एमएसएमई 6 करोड़, एमएसएमई मीन्स स्मॉल इंडस्ट्रीज है सर, वो 6 करोड़ के आसपास है. और उसमें 15 करोड़ से ज़्यादा डायरेक्ट जॉब्स है और 35 करोड़ इनडायरेक्ट जॉब्स है. तो हम समझ सकते हैं कि जो छोटी इंडस्ट्रीज़ है उसका रोल हमारी इकोनॉमी में कितना बड़ा है. ऑलमोस्ट आफ्टर एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ा रोल है, जिसके साथ सब ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जुड़ी है. बट अभी इंडस्ट्रीज़ का सिनारियो क्या है, इट रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट इनोवेशन. जैसे हम कोई बात करें, आज से 10 साल पहले कोई इंडस्ट्री में मशीन था, तो अभी 10 साल के बाद अभी जो मशीन है और 10 साल के बाद कैसा मशीन होगा
पूरा सिनारियो चेंज है। सबको ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, कम से कम कितने जितना ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेशन होए वो सबको चाहिए। तो इसके पीछे सबसे ज़्यादा जो रहता है वो इनोवेशंस का रहता है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्टअप इंडिया स्कीम लॉन्च की थी। जैसे अभी हमारे देश में आप सबको पता ही होगा 1,60,000 रजिस्टर्ड स्टार्टअप है एज पर DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड के हिसाब से। और उसमें हम देखें तो अभी 120 प्लस यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। यूनिकॉर्न होना बहुत बड़ी बात है स्टार्टअप में, जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन हो। अभी रुपीज टर्म में देखें तो 8,500 करोड़ की ऊपर की जिसकी कंपनी है वैल्यू है वो यूनिकॉर्न है। तो अभी 120 प्लस है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो भी टारगेट है कि शॉर्ट टर्म में हम 1,000 यूनिकॉर्न्स बनाए और सब ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स आए। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारी, जैसे मैंने मिनिस्ट्री बनाया तो उसकी अलग अलग स्कीम्स रहती है गवर्नमेंट की। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का देखें तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स है, बाद में स्टार्टअप स्कीम्स है। ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट में रिन्यूएबल स्कीम्स है, सोलार की स्कीम्स है, बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी है, बायोटेक्नोलॉजी की पॉलिसी है। देन अभी रिसेंटली हम बात करें तो सेमीकंडक्टर की पॉलिसी भी गुजरात सरकार ने लॉन्च की है। उसके बाद ITS सर्विस भी है। तो जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की मैं बात करूँ तो MSMEs के लिए हमारी ऑफिस है DIC, वो आत्मनिर्भर गुजरात जो इंडस्ट्रीज के बेनिफिट के लिए काम करती है। वो पॉलिसी हमारे इम्प्लीमेंटेशन करना होता है। इस पॉलिसी में क्या होता है, जैसे इंडस्ट्री या कोई भी एस्टैब्लिश करनी है, जो आप स्टार्टअप और इनोवेशन के साथ जुड़े हो तो फाइनली तो आपका एम तो वही रहता है कि इस जो हमारा कंसेप्ट है उसको कॉमर्शियलाइज हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोशल और इकोनॉमिक बेनिफिट दूसरे लोगों को मिले हमारी प्रोडक्ट और जो सर्विसेज है उसमें इनोवेशंस लाने के बाद। तो आप जैसे ही उसको कॉमर्शियलाइज करोगे तो एक इंडस्ट्री में टर्म 3M, वी नीड मनी, मशीन एंड मैन पावर। तो ये तीनों में गवर्नमेंट आपको बेनिफिट देती है। जैसे मशीन लेना है तो आपको लोन लेनी पड़ेगी, मनी की ज़रूरियात है। बाद में मैन पावर है तो स्किल इंडिया मिशन है, डिजिटल इंडिया से आप भी जुड़ सकते हो। और इसमें जैसे आप गवर्नमेंट सारी बैंक्स है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है वगैरह, उसमें फंड की रिक्वायरमेंट रहती है। तो आप जब प्रोजेक्ट सबमिट करते हो तो इफ़ इट इज़ रूटेड थ्रू आवर ऑफिस तो गवर्नमेंट बैंक्स में ज़्यादा वेट रहता है कि अभी गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया है इसका लोन, सो दो विल गिव द सब्सिडी एज वेल इफ़ यू टेक द लोन ऑल्सो। तो आप हमारी ऑफिस का भी आप इसके बारे में कांटेक्ट कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात मुझे अभी इंटरेक्शन हो रहा तो वो लगी कि पहले एक एजुकेशन सिस्टम अलग थी, इंडस्ट्री अलग थी। अभी हमारे जैसे मैंने बताया अभी सारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, स्कूल्स में इंडस्ट्री की बात होने लगी है, एंटरप्रेन्योरशिप की बात होने लगी है। बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि हम जब कॉलेज या स्कूल में जाते हैं तो व्हाट वी थॉट अबाउट अवर जॉब ओनली, हमको डॉक्टर बनना है, हमको इंजीनियर बनना है। नोबडी वुड बी टॉकिंग अबाउट कि हमको हमारा बिजनेस स्टार्ट करना है। सो गुजरात इज ऑलवेज ए गुड प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट योर बिजनेस। आप सबको पता ही होगा, स्टार्टअप रैंकिंग हो या ईज ऑफ बिजनेस डूइंग का रैंकिंग हो, लॉजिस्टिक का रैंकिंग हो, उसमें गुजरात हमेशा नंबर 1 पे रहा है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारे वहाँ एंटरप्रेन्योरशिप बहुत बड़ी जो दूसरे स्टेट से है उसमें बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज। हम पूरे गुजरात की बात करें तो सूरत इज़ फेमस फॉर टेक्सटाइल एंड डायमंड, वापी अंकलेश्वर फॉर केमिकल्स, दैन अहमदाबाद फॉर टेक्सटाइल एंड फार्मास्यूटिकल्स। राजकोट की बात करें तो वी आर द लीडर इन द इंजीनियरिंग सेक्टर। दैट इज़ ऑल्सो इंजीनियरिंग सेक्टर क्या रहता है कि उसमें एंटरप्रेन्योरशिप तो है, बट उसमें एजुकेशन, स्किल और इनोवेशंस की भी बहुत ज़रूरत रहती है, क्योंकि जो भी इंस्ट्रूमेंट मशीन्स बोलते हैं that requires very much precision। हमारे वहाँ ऑटोमोबाइल के तो सारे अभी ऑलमोस्ट ऑल कंपोनेंट्स वी आर मैन्युफैक्चरिंग इन राजकोट डिस्ट्रिक्ट, बट अभी सबसे ज़्यादा प्रिसीजन की बात आए तो वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड सम स्टार्टअप्स इन डिफेंस एंड एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। जैसे अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एयरबस जो बनाने का बड़ौदा में इनोग्रेशन किया था, उसके पार्ट्स भी अभी राजकोट में बनने लगे हैं। बहुत सारे जो डिफेंस के प्रोडक्ट्स है उसके पार्ट्स भी अभी राजकोट में बनने लगे हैं। और जैसे जामनगर की बात करें तो ब्रास पार्ट्स है, भावनगर प्लास्टिक इंडस्ट्रीज। इसलिए सारे गुजरात में कोई ना कोई शहर है तो उसमें क्या इंडस्ट्री और इनोवेशंस वहाँ पे रहता ही है। बट अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी है कि वहाँ पे इनोवेशंस की अभी भी ज़रूरत है। आपको ऐसा लगे कि तो हम इंडस्ट्री के पास से भी बहुत बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट मंगवाते रहते हैं। देन वी कोलैबोरेट विद द वेरियस यूनिवर्सिटीज, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अभी इंडस्ट्री में इस प्रकार के प्रॉब्लम है, उसके पास कैपेबिलिटी तो है ही सही, बट उसको प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हाउ वी कुड थिंक अबाउट दैट थ्रू इनोवेशन। सबसे कम कॉस्ट में लगे ऐसे सॉल्यूशंस देना है, और उससे क्या होता है कि प्रोडक्शन भी बढ़े और
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका मार्केटिंग भी हो, इसलिए क्योंकि अभी क्या है कि जो भी बिजनेस करना है तो जैसे ट्रेडिशनल थॉट से हम नहीं बिजनेस कर सकते। हमको अभी प्रोडक्ट बनानी है तो उसका मार्केटिंग भी अच्छी तरह से होना चाहिए था। वी हैव टू यूज़ द सोशल मीडिया एंड ऑल, तो उसमें भी अभी बहुत सारे इनोवेशंस आने लगे। ऐसे नहीं कि हमने एडवर्टाइज डाल दी और सारे लोग देखने होना चालू हो जाएंगे। हमको पता है, हम मोबाइल देखते हैं तो 90% जो भी है तो हम उसको अवॉइड ही करते हैं, जाने देते हैं इसमें क्या है इसमें क्या है। तो उसमें भी अलग अलग थॉट के हिसाब से हम कैसे अपनी प्रोडक्ट मार्केट करें, हम कैसे अपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करें, वैसे भी बहुत सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट आएंगे। तो हम यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी शेयर करेंगे। और आपको जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में जब भी जिसको जानकारी चाहिए तो हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी ऑफिस रहती है। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर गुजरात गवर्नमेंट की ऑफिस रहती है। तो इंडस्ट्रीज जो भी मैंने सेक्टर स्पेसिफिक हमारी स्कीम्स रहती है, एमएसएमएस की स्कीम्स रहती है, हमारी इंडस्ट्री जैसे एसएसआईपी है जो स्टूडेंट स्टार्टअप की स्कीम है, ऐसे इंडस्ट्रियल की भी स्टार्टअप की स्कीम है। कोई सपोज स्टूडेंट नहीं है बट अभी इंडस्ट्री में है तो उसको स्टार्टअप चालू करना है, तो हमारी भी स्टार्टअप गुजरात बहुत अच्छी स्कीम है। उसमें 30 लाख रुपए तक का प्रोडक्ट डेवलपमेंट का हम सब्सिडी देते हैं, 15,000 रुपये सस्टेंस अलाउंस देते हैं 1 साल के लिए। और ऐसे बहुत सारी स्कीम्स है हमारी। उसके बाद में हम स्पेशल सेशन रखेंगे जब क्योंकि हमको पता है कि वाइब्रेंट गुजरात, सर आपको भी अभी क्या, वाइब्रेंट गुजरात हमारी हर 2 साल में एक बहुत बड़ी इवेंट होती थी गुजरात गवर्नमेंट की। वो हर 2 साल में गांधीनगर से होती थी। अभी इस फ्रॉम दिस ईयर गवर्नमेंट हैव थॉट दैट एक वाइब्रेंट गुजरात है और रीजनल लेवल में भी करे, तो राजकोट, बड़ौदा, सूरत एंड महसाणा रीजनल लेवल में वाइब्रेंट होगा। तो अभी जनवरी 2026 में भी हमारा वाइब्रेंट का इवेंट है। और सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी जो लोकेशन हमने चूज़ किया है, तो यहाँ पे भी जैसे गांधीनगर में आप किसी ने कभी अटेंड किया होगा वाइब्रेंट गुजरात को, आपको पता होगा कि उसकी अहमियत क्या है। वो हमारा बहुत बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम है। उसमें क्या होता है, बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स, वर्ल्ड बिजनेसमैन को हम बुलाते हैं और गुजरात हैज़ ए प्लेटफॉर्म, वी डिस्प्ले देम, यू कम हियर एंड इन्वेस्ट हियर। क्योंकि क्या होता है, ऑब्वियसली स्मॉल इंडस्ट्रीज और जो स्टार्टअप है इट इज़ नीडेड, उसके सामने सामने हम लोगों को लार्ज इंडस्ट्रीज भी चाहिए। कोई एक बड़ी इंडस्ट्री आएगी तो उसके पीछे पीछे स्मॉल इंडस्ट्रीज भी आएगी। तो एक गवर्नमेंट का भी विजन है जो भी वेल्थ क्रिएट करता है, दैट ऑल्सो द वेल्थ क्रिएटर्स फॉर द नेशंस, और दे ऑल्सो आर द इम्पोर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। तो जैसे ही कुछ स्टार्टअप, एमएसएमई और इंडस्ट्रीज की बात आए तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टेक्ट अवर ऑफिस। वी आर sitting in Bahumadi Bhavan Race Course, first floor, and our office name is District Industry Center. Thank you. Thank you. I am very much thankful to the Saurashtra University for giving me the opportunity to speak here. Thank you, sir. Thank you, sir, for your motivating address and for reinforcing the Industry Institute Connect. Now we move to the presidential address, and it is our honor to invite Professor Dr. Utpal Joshi, sir, Honorable Vice Chancellor of Saurashtra University. Namaskar. Thank you for that proposal we have been working on. You have Mitesh V and Mitesh L here. Both are funding people, so we look forward to it. No problems. We'll keep issuing the logistics, facilities, air conditioned, everything. We need money. So this title is, this is disclaimer that as long as you pour in money, we don't have, I mean, HR is our responsibility. We'll put the HR whole full. So keeping all these things aside, I mean, first of all, congratulations that for 5 days you have been here and you have witnessed several proposals and how to, make a particular campus more vibrant. That is the whole idea, because you see, when the kid comes, for undergrad study or maybe after schooling, all that, we have a very, very, very big distance between the industry where he, thrive to get a job and the one curriculum that he studies, which never matches. So, in recent past, if you look at this 5-10 years, I mean, 2016, I guess, is where we have a startup day celebration, begin in January sometime. So from there on, every year we are celebrating, National Startup Day.
So in its own, it carries lot of messages with us. That conventionally what we think is, our education system was such that it was to get the job. Primarily the requirement, or we train the student in such a way that he is capable of getting a job and qualified to do so, to justice to the job. Now the thing has changed a little bit, in a sense that not only job, you seek the job, but at the same time, do you have capability to sustain yourself independently without anybody's support, even if you. So does your curriculum provide that? At present, the answer is no, obviously. Of course, NEP is in infant stage. It is to be still getting young and then mature. It may take time. It's a transition period. But then we have an opportunity in form of the startups. Now, if you look at the West, right, from where, it's kind of tested okay for us. Anybody who is, whosoever here goes and come back, he get tested okay kind of a stamp. And then he can rule everywhere. That is what the perception is. So if you look at West, primarily, the concept of this startup has come from that. The all, I would say AI is not taught in the classroom anywhere. May it be hardcore electronics or IT or computer science, it is not so. It has come because of this, all these platforms such as Amazon, or leave aside, you have a Starlinks. Now in India it is coming. Starlinks, that. So now you can have a telephonic conversation with the person who is in flight. Okay, through Starlink, it is there. Of course, we have some constraint of that. Now these are the very high quality kind of, high end kind of startups that we are talking about. But then with our ecosystem, what we have in present, we have huge amount of problem around us, right? May it be agriculture. To start with, everybody complains that what we are eating, vegetables are full of, fertilizers and this and that, pesticides, which are very harmful and all that. So that is a burning issue there itself. Now, plenty of startups have started in this particular sector. Definitely, see, it is going to lead to something. You cannot have any success tomorrow if you plan today. It's not that. So it is a long process, but that the process has begun at least. So these, the people like both Mitesh here, they are giving us the opportunity and platform that, you have idea, come share with us, and then there is a platform. Of course, in university also, the other two here, Ranjan Ben and Parth, they have been looking into all these matters, and all kinds of, SUSEC that we have, startup and innovation ecosystem that we provide is, I think we have 120 actually here registered so far. Yeah. See, we don't expect as such that this all 120 will come up with a prototype product. It may take time, but then even the ratio is, let's say, 30 to 35%. Still, it is a big in its own, right, where it can go to prototype, and then for scaling up you have industries. Most conventional one, he mentioned about some of the industries here. One of the most conventional and orthodox industry, what I have found, which is booming at the world level, is ceramics in Gujarat, which is Morbi and adjacent places, which are the hub of that. For generations like Simpolo and all that, they hire Hrithik Roshan and they hire, all kinds of stars in their advertisement. But if you see them, they don't want to move out of their conventional thought process, because there is a set margin, there is a set kind of raw material required. Now, how to move them that, okay, see, this is something wherein you can enter, where you have new product which is earlier not there. Going to give this. So there is some kind of a brain, you can say some kind of a blockage to industry also. At the same time, academia are good in publishing papers and they are happy, right? Getting published and promotion at the most, and then like my student is getting PhD. All these things is there. But then eventually when it comes to logical end to a research, the logical end to a research is the societal application. That is a logical end. May it be social science research, may it be linguistic research, may it be scientific research, may it be medical research or anything. The eventual logical end has to be
either a product development or at large the societal application of the product. And that is the whole idea and the spirit behind the startup and innovations. So every unit, every college, every school, I would say even now, but this is not in our purview, but then they should have this kind of students have excellent potential, but the only thing is we ask them only to speak something in the box. They are not going out of the box. That's a real problem. And when they do projects, even about not the startups, but when the MSc projects they do wonders. Why? Because they think themselves, they perform themselves, they do themselves, okay, at their risk, right? Where mentoring only is a passive kind of thing. So more like you can call it as a student centric. Our teaching is teacher centric. What he comes and delivers here, everybody has to just listen and clap. That's it. So it's a teacher centric. But when it is a student centric, perhaps startup is the one wherein all startup and entrepreneurship has to be there, and it is in our blood actually, right? India for long time has been doing a great business. If we see our ancestors, okay, they have been into this for long time in any of the sectors, right? Maybe we can rule it out as a mythology or whatever you say, but this Lothal and Harappa and Sanskrit, all this cultural this heritage and that we have is the proof of that. You don't have to go to very ancient time mythological era, but this is all like it is in the DNA of us, and we have a privilege to do so. On Amazon, if you do the online shopping, just last thing that I wanted to point out is if you scroll that few days back only, because I keep shopping online, so a few things, if you see that Indian startup products they have launched into their selling this thing. Okay, so I mean it's a platform. I would say that's a big platform, but then we have at a smaller scale also, at a regional center also, we may have such things. So having self-reliancy, self-development and being independent at an early age is really extremely good for individual, for society, for the state and country at large. And I wish all of you take advantage of whatever you have learned so far. This is not the end. I think it would be beginning when you go back to your places and try practicing what you have done here and what has been interacted with you. And I mean, all of you are experienced enough to know how to execute that, how to implement and get the best out of it. Wish you all the best. Thank you. Thank you very much, sir, for your visionary words and continuous encouragement for innovation-driven initiatives. We now move to the much-awaited certificate distribution ceremony. I request our dignitaries on the stage to kindly proceed with handing over the certificate to all over the participating faculty member. I will announce the name of the participants and they will come to get the certificate. Mr. Falgun Kaneria, Dr. Ashish Gorwadia, Dr. Ashish Gorwadia, Mr. Haresh Vaishnani, નાજાભાઈ કોડિયાતર, Miss Maithili Tripathi,
Mr. Hiren Gandecha, Dr. Viral Shah, Mr. Haresh Malakia, Mr. Shubh Shah, Haresh Malakia, Mr. Purvesh Vaidya, Dr. Rishikesh Upadhyay, Dr. Prabhansu Awasthi, Mr. Shohil Shah, Ms. Tanvi Shah, Ms. Kavita Sheth, Dr. Krishna Purohit, Dr. Kalyani Trivedi, Mr. Mehta Ketan, Mr. Hemik Solanki, Dr. Hemal Kansagra, Dr. Riddhi Tanna, Mr. Vivek Kanakate, Mr. Sanjay Chawda, Mr. Vijay C. Sarvaiya, Mr. Parth Sharma, Dr. Bhavna Vaidya, Miss Aditi Pathak, Dr. Dilip Sidodia, Miss Sandra Ambrose, Mr. Rajdeep Gohil, Miss Hetal Ramani, Miss Kavita Bajala, Mr. Leva Bharat Kumar, Mr. Abhay Solanki,
Mr. Bhavesh Dalwadi. Miss Pooja Pandya. Miss Seth Kavita. Thank you all the dignitaries. Now moving forward, we facilitate our coordinator of the FDP. I request Professor Dr. Utpal Joshi sir to facilitate Dr. Ranjan Khunt ma'am. Thank you sir. Thank you ma'am. Now I request Sri Mitesh Ladani sir to facilitate co-coordinator of FDP Mr. Parth Sejpal. Thank you sir. Next, we felicitate our organizing team of the faculty development program. I would like to request all the dignitaries to please facilitate our organizing team. Dr. Jitendra Radadia, Miss Manisha Dave, Dr. Chirag Savalia, Miss Vaishali Bagda, Miss Urvi Kanaba, Miss Urvisha Kotadia, Miss Rita Ajani, Mr. Rohit Molia, Mr. Nirav Vagadia, Mr. Digvijay Sijala,
Next, Parul Joshi remaining for the certificate. Volunteer. Raju Odedra. Now we felicitate our volunteer Deep Pamak. Hi. Thank you so much, all the dignitaries. As we near to the end of today's program, I take this opportunity to invite Mr. Parth Sejpal, Co-Coordinator FDP, IPR Chair Professor Spriha Chair, Saurashtra University, for vote of thanks. Good evening, everyone. All are waiting to just leave, but yes, at the end, as we are coming close to the transformative 5 days faculty development program on innovation and entrepreneurship. I feel deeply honored to extend the vote of thanks on behalf of entire organizing team. To begin with, I express my heartfelt gratitude to our Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. Utpal Joshi sir, for his constant encouragement and for taking time to preside our today's session with his visionary insights. I am grateful to Sri Mitesh Ladani sir, our guest of honor from District Industry Center Rajkot, for sharing their practical perspective and policy insights that strengthened our entrepreneurial outlook. I special thanks to Sri Mitesh Wader, representative of Ministry of Education's Innovation Cell, for his valuable presence and his message that inspired us all to continue nurturing innovation in higher education. My deep appreciation goes to Dr. Ranjan Khoot sir, Ranjan Khoot ma'am, coordinator of this FDP, whose guidance and dynamic leadership has been the driving force behind this planning and execution of this entire program. To all our experts, speakers, and resource persons, thank you for your invaluable sessions and the generous sharing your knowledge and experience. You have truly evaluated the learning of our participants. To all our enthusiastic faculty participants, your curiosity, engagement, and discussions made this FTP meaningful and vibrant. Thank you all for your active participations throughout. A very special thanks to Department of Pharmacy, Saurashtra University, for gracious providing us the venue and infrastructure for the session, and also thanks to Estate Department for the providing venue and infrastructure for valedictory session. Your cooperation is truly appreciated. I would like to thank each and every committee member of who contributed to the organizing this FDP. The registration and account committee, Ms. Vaisali Bagda and Manisha Dave ma'am. The social media and media committee, Mr. Rohit Molia, Mr. Nirav Wagadia, Mr. Digvijay C. Jala. Logistic committee, Mr. Chirag Sawaliya, Ms. Urvi Kanabar and Ms. Urvisa Kotadia. Stage committee, Ms. Anjali Rathod and Ms. Rita Ajani. Your dedication and coordination and the teamwork has been foundation for this program success. I also extend our thanks to Department of Journalism for their coverage and promotional support, ensuring wide visibility of this FDP. To all our volunteers who worked diligently in background with a smile, thank you for being here as a lifeline for this event. To our food suppliers, and thank you once again, and wishing you continued success in your journey of innovation and education. Thank you. Thank you, sir, for acknowledging every contribution who made this FTP a resounding success. With that, we officially conclude this faculty development program. Let us carry forward the momentum and insights from this FTP into the classrooms.
incubation center, and institutional strategies. Together, let us educate to innovate and transform ideas into impact. Thank you once again and have a wonderful evening. Come forward for the group photo. Dignitaries, please sit on